Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. I think this is better. Yeah. All right. I. I think this is better. Yeah. Oh. Okay, let's remove this. Oh. Okay, let's remove this. All right, everyone. Welcome to another live stream, Trade with Tayyib. And today we'll be going over some of the analysis that we did last week and possibly taking any trades. Today is September the 2nd. Yeah. I think crypto overall, it's very bearish, at least for next day or two. We should possibly fill this wick and continue to drop down and come down to these lows. I think this will be something. This will be a good target, unless we found a good support here. As of right now, we're bearish. We're in the bearish market. Ethereum seems about the same. We broke below the previous lows, broke and closed below the previous lows. I think we came down the support, we tested it and rejected. So as of right now, we're in the bearish market. Let's see how we react to these prices. Bitcoin holding its ground so far. Weekly, we're not bearish. GJ weekly. Okay, nice. I think, yeah, as long as we're not breaking below these lows here, we should be able to. Nice, thank you. Can you say hi to Pocky? Hey, Pocky. I still don't know whose account this is, who is the owner. So if you want to introduce yourself, that would be great too. Let's see. Yeah, so as far as GJ goes, I know we're coming down hard, but weekly, as long as we're not breaking below the previous lows of 197.847, we should continue to push up. So maybe we're looking at something sort of a support around these areas and continue to push and look for buying opportunities. That's what I would be looking forward to on GJ. Um, let's see. Then we have gold, the OG fan. Abu, what's going on, Basit? तेरा नाम पाकी क्यों है? स्ट्रीम सही चल रही है? Let's see. The amount of volume we have on in the market right now, I would anticipate for the sells to continue down to at least 34.70. So I'm going to be looking for opportunities on the retracement and then continue to push down. So we have a close of this 15-minute in next 10 seconds. Watching it at 3 p.m. here. Oh, you're in Switzerland. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Nice. Enjoy. Have fun. Let's see.
या मैंने नया माइक्रोफोन मंगवाया, नई नया सेटअप किया. I'm trying things out, making sure that the voice is good, the stream quality is better. mm, oh, साद को मैसेज करना है. Hourly, we came down 4 hour. Yeah, let's wait for this 4 hour to close, because if we're closing this in a doji, then as long as we're respecting below this low, we should be able to continue to push up and test these highs. And so yeah, it makes sense for us to wait for the 4 hour to give us a better direction in which way the market is headed. Again, let's take a look at the price action based on the news. So we have ISM manufacturing PMI today at 9 a.m. Last time, previously it was at 48, anticipating for it to be 49. And let's see. Well, what is PSM? What is it? PMI, ISM PMI. What? The ISM Manufacturer PMI is a monthly economic index released by the Institute for Supply Management. Health of okay, so health of the U.S. manufacturing sector. Makes sense. Makes sense. So it's released on a monthly basis, which I'm assuming it was probably released on the first of the month. Okay, so it was released on the first of the month, and it was below the forecast. It was below the previous one. So let's see what kind of impact did it make. Jeez. It definitely made an impact. Let's take a look. I'm just gonna go directly on the 15-minute. Let's do some digging. What was that, 7:30? Holy. Oh, we have NFP. Oh, we had NFP that day. Yeah. So basically, what happens is that non-farm payroll is a very heavy volume infused news, and whenever there is NFP and then there is ISM PMI, whatever the healthcare news is, I don't think the healthcare news is gonna shine on its own because NFP has already made a huge move. So I think we should be able to see that today, how the price reacts, because there is not no other big news that is coming in. So because there was NFP, there was big news last month. That's why I think our healthcare news didn't really shine much, didn't really have an impact because NFP already made the move of holy 5,000 pips. Watching it from the okay, that's faucet. Yeah, let's take a look at it on
When was it in July? July 1st. July 1st. Okay. This is it. So what I'm doing here is looking back at the data and trying to find out what kind of reaction did the price do based on the news, based on the numbers being lower than expected, which I believe it's actually. Let's take a look at on July, right? So July we had ISM manufacturing PMI. We had 40 anticipated. Previous one was 48.5. Anticipation was higher, and then it came. The actual forecast, the actual news was higher than forecast and previous. So, based on that, let's see. We have 9 a.m. Okay, so it was bearish. The data was positive and it was bearish, so the number was high, and hence it was bearish. Let's see. 9 a.m. There's not a whole lot going on. See, if I would have traded here, I would have had a buy stop on the top and a sell stop here somewhere. So it's technically it didn't really do much. It probably went up what, maybe 20, 14 pips. So news with not a whole lot of volume. That's what this is. So we've backdated for June, we've backdated for July, and we've backdated for August. Now we're in September. So both July and August didn't really have much of a move. Let's see. Got this. Alright, let's review some of these. I'm gonna actually take Saad on the call. Let's do a quick speed test. Not bad. So basically, I fixed the stream settings, and I elevated the laptop. So just on Wi-Fi, I think 200, it's more than enough. Okay, so I'm gonna call you now. Let's see. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। स्ट्रीम पे हैं आप? Ooh, in the beginning of the stream, I did mention that we should be able to continue down to fill this wick, and we were
we were at the top of this candle here, so I think we've came down quite a bit. I should be continue to it should continue to come down and fill this wick, and then possibly um, test these lows right here. अच्छा साद ऐसा करते हैं. Let's review the work that you have done. Let's start out with the let's see. ट्रैकर ये अपडेट है. कौन सी सेकंड वाली? Basically ये September 1st ये all of these 1 2 3 4 5 6 videos ये अपडेटेड है. परफेक्ट. और ये वाली जो मैंने आपको नोट भेजा था यहाँ पे इंक्लूड द चार्ट ऑन दिस फर्स्ट वन. बस अभी अपलोड कर देता हूँ. ये रेडी है. ये डन है. ये डन है. जस्ट अपलोड कर दिया. अच्छा यानी कि अभी अभी अपलोड नहीं हुई. ये नहीं, इस लिंक से ये एक्सेसिबल नहीं है जो मैंने नोट भेजा हुआ. चलो आप ये कर लो एंड हाँ ये कर लो. एंड सो मंडे let's review what you've worked on yesterday. Make money trading news. I will fix the title. Damn. I'm gonna show you how to read the news here in quick 30 seconds, right? You are at forexfactory.com. You check the date for current date. You are locating USD or the pair that you are trading. So let's say if you're trading Euro or GBP, you'll be locating Why can't I listen to it? Internal. USD claims unemployment. They're anticipating 225. Previously, it was 227, which means that we were looking for a reduction in the claims for unemployment. That is it's just not. There you go. Right. So we're already anticipating for gold to go down. Damn. I'm gonna show you how to read the news here in quick 30 seconds, right? You are at forexfactory.com. You check the date for current date. You are locating USD or the pair that you are trading. So let's say if you're trading Euro or GBP, you'll be locating the news for that pair. The yellow, red, orange is the criticality of the news. So red is I'm looking at USD. It is a high impact news, which means that there's going to be a big move in the market. USD claims unemployment. They're anticipating 225. Previously, it was 227, which means that we were looking for a reduction in the claims for unemployment. That is a good news for USD, right? So we're already anticipating for gold to go down because we're expecting a lower number of unemployment, and the news came out even lower than anticipating. That means that it confirmed that in fact USD is stronger currently in the market compared to gold. Hence, the move went down. Nice. This is really nice. आपकी आवाज़ ना बड़ी मम्बल सी आ रही है. दोबारा बोलना. मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो आप दोबारा एजुकेशनल कंटेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर ना हम प्रॉपर जिस रील का एक फॉर्मेट होता है ना एडिट करने का, मतलब बैकग्राउंड से पॉप अप ये वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें ऐड ऑन होंगी, लेकिन वो इस तरह ना कि आपका फुल आपकी बॉडी पूरी आ रही हो ना उसके अंदर पूरी स्क्रीन में, तब होगा. अगर मैं यूँ यहाँ से अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ से पिक करता रहूँ तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा. किस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा? मीन्स जब एजुकेशनल कंटेंट जो होगा ना वो प्रॉपर एक रील फॉर्मेट में बनेगा जो आप रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट कैमरा से. हाँ, तो उससे क्या चीज़ इम्प्रूव होगी? व्यूअरशिप. अच्छा अच्छा अच्छा. देखना है तो वो जाहिर सी बात है. यहाँ पे अभी आपने जो लास्ट वीडियो है ना ये वाली, इसकी जो क्वालिटी है आपकी वीडियो की वो डाउन. हाँ ये क्वालिटी बहुत डाउन है. मैं अभी आपसे यही पूछने लगा था कि यार इसकी क्वालिटी जो है ना कहीं पे अगर आप किसी एआई के ज़रिए क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर सकते हो. अच्छा तो
कोई और एआई नॉइस और वो सब कुछ सेट हुआ है ना, वो वहीं से हुआ है। सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हुई हैं, सिर्फ की क्वालिटी है ना वो हम्म नहीं हो रहा। लेट्स सी। तो आप कह रहे हो क्वालिटी अब बेहतर नहीं हो सकती एआई के ज़रिए? क्वालिटी क्वालिटी बेटर हो सकती है, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो है ना, जो अब ये वाली वीडियो है इसकी ज़्यादा बेहतर आएगी, बिकॉज इसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव्ड है। और जब आप लास्ट पे यूज़ करते हो आप 720 पे रिकॉर्ड कर रहे थे अपनी भी और रिकॉर्डिंग भी। ठीक ठीक ठीक। ओके। Mm. Overall, I think the material is really good. So let's uh, let's review the other one too. So today I'm going to help you identify how to locate. Today I'm going to help you identify how to locate support and resistance in the market. So support is basically the current market structure that is holding up the price, and whereas resistance is the current market structure is high where the price is rejecting from. And you can learn how to draw support and resistance, which will help you navigate in the markets. Another example of support and resistance that we can create live is on the left hand side. We created this low, so that will be an area of support, and we created this high, and that became a resistance area because we were able to reject from this area. Now, whatever happens next is where we'll be able to cover that in another lesson, but that's how you identify support and resistance. Hope that helps. Nice. Basically, आप जब import कर रहे हो YouTube से video, it is not importing with high quality. लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो भी YouTube चल रही है, what how is the quality for that? आज की क्वालिटी में फर्क बेहतर है। क्योंकि मैंने पुरानी भी अपनी वीडियोस उठा के देखी हैं किसी इन्हीं की ना प्रॉपर एक गेमिंग कंप्यूटर से, उसमें गेमिंग कंप्यूटर नहीं, वो लैपटॉप एसएसडी लगी हुई थी। आई मीन इट्स जस्ट अपग्रेडेड लैपटॉप, तो उसमें क्वालिटी एक्चुअली अच्छी आ रही थी। यूट्यूब की मेरी पुरानी वीडियोस की भी क्वालिटी अच्छी आ रही थी। तो आप देखो आप सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ से कोई फ़र्क आ रहा है तो मैं ना वेरिएंट से डाउनलोड करता हूँ, और यहाँ पे ना मेरे पास मैक्सिमम ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैक्सिमम जो आपकी वीडियो का भी ऑप्शन आता है ना, वो आता है 720p। ठीक है, हम्म मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जब आप ना इम्प्रूव करेंगे ना उधर से बैक एंड पे जो आपकी स्क्रीन की क्वालिटी है, वो आप जब 1080 पे लेके आएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली 1080 पे सेव होगी। फिर मेरे पास भी ऑप्शन होगा, मैं भी 1080 पे उसको ना पिक कर सकता हूँ।
अभी फ़िलहाल जो स्ट्रीम हो रही है ना वो हो रही है ऑडियो 1280 by 720 ये आउटपुट है. 1280 ये 720 की है ना. 1280 by ये 720 है. अभी ये 1280 है ना, उसकी जगह पे होना चाहिए 1920 by 1080 होना चाहिए. 720 की जगह 1080 और 1920 होनी चाहिए 1280 की जगह. I'm gonna enter a ये cell 720 right की here. रिकॉर्ड होगी फिर भी. लेकिन इसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू वो 14 अगस्त वाली जो वीडियो है उससे बेहतर होगी क्योंकि उसमें वेबकैम छोटा था उस टाइम पे. अच्छा, So चलो देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं. I'm gonna Let's enter a see. cell right here. I'm gonna enter a cell. But try to see if how you can use any software, or let's see if you know which software can enhance my resolution of video. Try to see कैसे आप ना resolution enhance कर सकते हो edit करने के बाद या edit करते वक्त. And maybe, you know, let's see, Reddit. Let's take a look at Reddit. Files and MP4 versions converted from so Adobe Enhance is good. Topaz. Topaz इसके रिव्यू अच्छे आए हुए हैं. Either Topaz video, yeah, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कहा हुआ है. I have Topaz. I would be willing to do the upscaling for you at a reasonable cost. Yeah. Let's see, what's Topaz? Topaz video AI. ये देख लो, इसके रिव्यू, टोपाज एक सॉफ्टवेयर था, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं. Try to see if that helps you upscale the resolution. अच्छा, और one more feedback is, let's see, actually मैं आपको feedback यहीं पे दे देता हूँ, ट्रैकर में मैं नोट कर दूँगा. To make sure that some of these fonts on, जैसे आप देख ना, ये क्या कहते हैं वीडियो में, उसमें कैप्शंस या तो छोटे हैं या तो इट्स ऑल पूरी 1 मिनट की वीडियो में ना एक तरह का कैप्शंस चल रहे हैं. कभी यानी कि एक बड़ा लफ्ज़ ऊपर आ गया, कभी एक बड़ा लफ्ज़ नीचे आ गया, इस तरह. यानी कि आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल बिट बेटर. ये जब आगे की वीडियो के लिए इट्स जस्ट अ फीडबैक, बट दिस वन इज़ इट्स ओके. आगे की वीडियो के लिए जो है ना, आप देखना कि कैप्शंस जो है ना, कि पूरी 1 मिनट की वीडियो में कैप्शंस सिर्फ एक लाइन से चल रहे हैं. दैट वी नीड टू चेंज दैट. ठीक है, डन हो गया. टाइम क्या हो गया? 8:09 हो गए हैं.
वीकेंड कैसा गुजरा साद? What did you do? कल का दिन बस गुजर गया, गुजर बोरिंग गया। भी था। ये आप लोगों का तो लेबर डे जो है ना डिफरेंट टाइम पे होता है, हमारा डिफरेंट टाइम पे होता है। नहीं मीन क्या, फर्स्ट मई को ओवरऑल भी होता पूरी वर्ल्ड में। नहीं, हमारा लेबर डे 1 सितंबर को होता है। Let's see when labor Pakistan. Yeah, May 1st. September 1st UK में देखते हैं। May 5th China. या पूरी दुनिया में मई 1st से मई 5th तक होता है। लेट्स सी, कनाडा में भी सितंबर 1st को होता है। यार मैंने एक और चीज देखी है कि आदमी वो इस बात से ज्यादा मुझे हैरानगी नहीं होती, मतलब एक दो और चीजें भी मैंने देखी थी कि वहाँ पे ना एक दो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए थे ब्लॉग्स के लिए ना, तो वो भी यूएस से थे, बट उनका ये सीन था कि यार वहाँ पे ना 14 अगस्त भी जब थी वो भी कोई किसी और मंथ में वो कर रहे थे सेलिब्रेट, पाकिस्तान डे। 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही थी, मतलब पाकिस्तान डे ना वो किसी और डे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। किसी और दिन। नहीं नहीं, वो वीकेंड पे हो शायद कि भाई वीकेंड आ गया है तो जो है ना हमने एक इवेंट रखा हुआ है तो सारे आ जाएं। तो वो 14 अगस्त के सबसे करीब वाला वीकेंड जब सब फ्री होते हैं ना तो इस तरह लोग यहाँ पे कर लेते हैं छुट्टियों में कि भाई ये। और हाँ फरहान भाई ने भी ना लास्ट जो किया था वो भी उन्होंने मतलब लास्ट एक ऐसे ही किया था कि वो कहते हैं भी आज यहाँ पे पाकिस्तान डे सेलिब्रेट हो रहा है हाँ आई अक्टूबर मीन के सितंबर वही में। ना, वो अगस्त में ही हुआ ना, तो वो क्या कहते हैं पता है क्या होता है, एक इवेंट वो सेट कर लेते हैं, एक डेट सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इस डेट को हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है। तो वो 14 अगस्त फिर अगर जैसे ट्यूसडे को आती है, ट्यूसडे को सब ऑफिस में होते हैं, यहाँ पे वीकडे होता है तो कोई कुछ करता नहीं है। तो वो फिर कहते हैं कि जो भी कोई वीकेंड हो इस 14 अगस्त के वीकेंड या उससे अगले वीकेंड जो है ना वो फिर प्रॉपर एक सेटअप करते हैं और उस पर वो 14 अगस्त सेलिब्रेट, इन्हीं के जो भी इवेंट होता है उस पर वो सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स द वे बिकॉज वीकडेज पे कोई फ्री नहीं होता, कोई बस काम पे होते हैं सारे। यार मतलब वहाँ पे लाइफ ज्यादा बिजी है। यार यहाँ पे लाइफ वर्किंग क्लास लाइफ है, दैट्स ऑल इट इज। आई मीन यहाँ पे काम काम और कायदे आज़म का फरमान जो है ना वो अमेरिका के लिए है और ये बाहर के मुल्कों के लिए। पाकिस्तान में तो फिर भी बंदा आई मीन इट्स मोर ऑफ अ लाविश यार लाइफ पाकिस्तान बिकॉज ये भी नहीं कहना चाहिए, जंग से नहीं डरे, सलाफ आगे सलाफ में कूद पड़े हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे तालिबान हो? को जी जी, हाँ हमारा तो खैर घर भी मतलब मैं भी मुरीद देश के करीब ही हूँ, तो हमारे पास वीडियोस आती हैं ड्रोन जहाँ गिरता था वहाँ पे लोग भाग भाग के जाते थे। उसके बाद हाँ वही ना ये वो देखना भी रॉकेट हुआ लॉन्च क्या हो रहे हैं और वो मतलब बैठ के अपने सामने सब कुछ देख रहे हैं। या think we could, yeah, there's enough range for GJ buys, sorry, sells, but I am more interested in gold. Yeah, we've created a lower wick here. We have created indeed a lower wick, but this wick right here is 50 pips. That's that's a lot. That's a lot range. It's a long range. Basically, Saad, what's happening here is that we have came down. We have created support. We have come down and we have created support, and I'm gonna explain to you here in just a second. Give me C trader.
So what I'm looking forward to having a buy right here. So when the candle, when this red flips to green, that's what I am, and that's when I'm anticipating for price to continue to push up. Okay, yeah, we're in this trade. We are in this trade. यार पास काम करते क्या हुआ? यार ये साथ छोटा सा जो बैठा है वो Oh, ऐसा कंफ्यूज हो रहा है gold. 15-minute. So basically, what I'm anticipating for price to do is not break below its previous low and continue to push up. Because if the price breaks its previous low at that time, yeah, I'm exiting this trade. Because if it's breaking its previous low, it can continue to push down, and I am not going to be in the trade for that. Let's see. Oh, see, अगर मैं अभी भी trade में होता, then I would be in like $100 worth of loss, whereas I only lost $50, 56. So that is how you can manage your risk. You have to identify where price can move, and that's where you would have your stop loss. And if it continues to move in that direction, then it's invalidating your trade idea. Now, if it flips bullish, or I would wait for this candle to close. I'm gonna wait for this candle to close and see which direction the price is headed. But as of right now, um, it's as of right now we're uncertain because I think we're coming down for 1 hour. Yeah. $30-minute is bearish. You know what could be the possibility is, so we have 30-minute bearish, we have 1 hour bearish. What we could anticipate for price to create resistance here, and we could continue to push down to test these lows. That's about 72 pips. So if we can create resistance around this area,
and the next candle could continue to push down. What time is it? We have 10 minutes before this candle close. So, Saad, are we supposed to get for Tuesday, for the two clips for Tuesday, when are we supposed to get those? मतलब मेरी सुबह होगी और आपकी रात होगी आज आज वहाँ पे ट्यूसडे ना क्या हुआ? वहाँ मंडे है ट्यूसडे यहाँ पे ट्यूसडे की सुबह हो चुकी है, स्ट्रीम चल रही है ट्यूसडे की. ओके रात तक आपको क्लिप मिल जाएंगे आपकी रात तक ठीक है, ओके. मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर दिया ना, या जो भी आपने अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ट्राई टू एक्चुअली आई एम गोना डाउनलोड इट टू. ट्राई टू रेजोल्यूशन जो है ना, इन जो भी वीडियोस आपने अभी अपलोड किए ना, देखना उसमें से किसी की एक एग्जांपल यूज़ करना, और रेजोल्यूशन जो है ना अपस्केल करना, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया है. अगर आपको नहीं पता यूज़ कैसे करना है, यूट्यूब इट, फिगर इट आउट, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन. सही है, क्योंकि अगर रेजोल्यूशन बेहतर हो सकती है सॉफ्टवेयर से, देन दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. Let's do a speed test. आज तो इसलिए मेरे ख्याल से देख रहे थे स्क्रीन लैग नहीं कर रही स्ट्रीम लैग नहीं कर रही ना, सेटिंग्स आपके भाई ने ऐसे बिठाई हैं. Let's see. Bro, close. Speed test. Yep. स्पीड नीचे नहीं जा रही स्ट्रीम की, आप देख रहे हो. शुरू में भी 200 कुछ थी, अभी भी 200 ही है. लैपटॉप भी मैंने एलिवेट किया हुआ है. चेंज कर लिए ये मैंने नहीं एलिवेट किया है उसको ना, वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है. मुझे लैपटॉप आपने चेंज किया हम पहले ही दिखाया स्क्रीन में ये मैंने माइक लिया नया. दिस ये आवाज़ क्लियर है मैं अपने दोस्त के पास गया था इस वीकेंड में. वो मुझे कह रहा था कि सब कुछ ठीक है लेकिन माइक बहुत घटिया है. मैंने कहा चलो माइक चेंज करते हैं. हालांकि मेरे पास जो हेडफोन्स है ना, वो गेमिंग हेडफोन्स हैं, बट गेमिंग हेडफोन्स स्ट्रीम के लिए यूज़ नहीं हो सकते. माइक है ना उसका माइक ऐसा कि वो नहीं होता प्रोफेशनल से आप इसके ऊपर प्रोफेशनलिज्म ले जाओ प्रोफेशनल काम उससे करो ऐसा ही है. वो जस्ट ये इतना होता है कि आपको गेम के अंदर क्वालिटी प्रोवाइड करता है और साउंड का होता है साउंड इससे अच्छी आपको कोई और हेडसेट में प्रोवाइड करेगा. वही ना, वो स्ट्रीमिंग के लिए देन इट्स नॉट ऑप्टिमल. आप स्ट्रीम लैपटॉप पे वॉच करते, कंप्यूटर पे वॉच करते हो या फिर फ़ोन पे हो? मैं अभी फोन पे ओके. क्योंकि मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया. आई एम गोना ब्रिंग इट टू द स्क्रीन. मैं दिखाता हूँ कैसा है.
I'll be right back. Okay. So right now, so far we have material. Saad, we have the material for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Monday, and then Tuesday, Monday and a half. हमारे पास अभी एक पूरे वीक का, आज से एक पूरे वीक का कंटेंट मौजूद है. Yes. So I तो think आज लोअर एक्स आ जाएगी. hmm रात को लोअर एक्स आ जाएंगी. लोअर एक्स पे. नहीं लोअर एक्स्ट्रा और हो जाएगी ना रात को. हाँ जी हाँ जी. सो वही ना, आप इन्हीं के वो आप ट्यूसडे का लाओगे तो आई थिंक हम कंटेंट वाइज एक हफ्ता आगे निकल गए हैं. दैट्स गुड. आई एम गोना कीप पोस्टिंग मोर कंटेंट. उसके बाद लाइव स्ट्रीम से भी हम कंटेंट निकालते रहेंगे. सेकेंडली इज़ दैट मैं ना अब इंशाल्लाह अपलोडिंग भी शुरू करूँगा तो ताकि हम कंटेंट एक हफ़्ता आगे हैं. अपलोड एडिटिंग उससे अगला और पोस्टिंग उससे अगला. I'm gonna have a buy stop depending on how this candle is gonna close. No, 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 no. I'm not supposed to have buy stop there. So I will take profits right here.
the reason why so I took this trade. मैंने अभी trade लिया buy ना, but I wasn't confident in this trade because previous candle has no wick. जैसे इसकी यहाँ पे wick है, यहाँ पे wick है. When the previous candle doesn't have a wick, then there is a possibility then that it can go up, but it can continue to push down and break its own low. तभी ये जैसे ये कर रही है ना, this is exactly the reason why I'm not confident in taking these kind of trades. लेकिन ये तो खुद ही छोटा बड़ा हो रही है. खुद ही छोटा बड़ा हो रही है. Yeah. Man, this is gonna be a clip. Saad, this is gonna be a clip. मैंने अभी जो explain किया ना, why I'm not confident in buys, and as I'm explaining कि मैं क्यों confident नहीं हूँ, it started happening that we continue to break below. So I'll give you the time, but note down this time in the stream that there is gonna be a clip. अभी ये टाइम नोट कर लिया ना, अभी आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन को कोई पता नहीं बड़ी छोटी हो जाए. स्ट्रीम का बड़ी छोटी हो जाए क्या मतलब? मतलब अगर हमने ना लिंक से स्ट्रीम नहीं करते हैं तो फिर तो टाइम मेंशन हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे ना कि टाइम पीछे रह जाएगा. नहीं I mean स्ट्रीम में हमें 56 मिनट्स हुए हैं. You know what I'm like, स्ट्रीम में 56 मिनट्स हो गए हैं, तो ये 56 मिनट्स रहेंगे. आप देखो ना, let me show you. So कहाँ पे हमारी स्ट्रीम? YouTube. Let's see. Trade with the अच्छा टाइम नहीं लिखा हुआ. सो यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रीम स्टार्टेड 57 मिनट्स अगो, तो मे बी वी कैन डू इट दैट वे. घटिया क्वालिटी सामने आई थी मेरे अभी स्ट्रीम की. Got disappointed. नहीं अभी वाली की मेरे ख्याल से वो मैं खुद इन्हीं के देख रहा हूँ ना, that's why it was like this. So because there is more volume in the market, I can identify that we have created support and a resistance on 5 minute. That is one of the reasons why you could go in the lower time frame, because lower time frame is more choppy. There's more choppiness happening in the lower time frame, but if you have identified more volume and you've identified structure in the lower time frame, then it is okay for you to go down and possibly anticipate, you know, what the market moves is going to be. That's another clip. 59 minutes. यार मैंने अगस्त 22 के बाद लाइव स्ट्रीम की है, लेकिन मेरे पास नोट्स कोई नहीं है उसके.
यानी कि मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि हाँ भी इस दिन इस लाइव स्ट्रीम पे ये मैंने बात की है। तो अगस्त 22 अगस्त के बाद मैंने नोट्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कोई भी बात नहीं हुई भी थी। जैसे आज अगस्त 22 अगस्त के बाद पहला जो हमने किया ना वो किया था या 22 अगस्त आज किया। उसके बाद जब आप स्ट्रीम में थे तो मैंने कोई एजुकेशनल बात नहीं की। नहीं नहीं थी वैसे 22 के बाद हमने ये जो बीच में वीडियो बनी है उसकी क्या कहते हैं ये कैंडल स्प्रेड वाली जो बात हुई थी ये लेट हुई थी ना। हाँ। ये 28 वाली स्ट्रीम हुई थी स्प्रेड वाली बात। ओह क्या फ्लो में चल रहा है पेन यार ये। हाँ आप सही कह रहे हो। ये हमने उसी में बात की थी, लेकिन इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। दैट इज what the hell is going on here? I think if we can close above this area, then I will be looking for buys to continue to push up. आप लोगों की मगरिब हो गई है। What could be the stop loss? 30 pips, and let's see. Yeah, I think it makes sense to take a buy here. A stop loss. These ranges.
So I've entered a buy here on 5 minute because the reason why I've identified some structure and there is more volume in the market. When there's more volume in the market, then you can go down to the lower time frames and identify some structure and possibly execute a trade on the break of that structure. And that is exactly what I did. And we are in buys right now. We're actually up about 15 pips. We're retracing back, but I'll be holding on to this buy to see possibly anticipate the test of these highs right here. As far as risk management, the price shouldn't close below its previous low. So if it comes down to its previous low, I'll be closing 50%. It's simple as that. I think we're at 25 pips. I'm gonna go ahead and close it right here. That's it, done, easy. We closed this buy for 20 pips, which is about $150, risking only. Let's see, how much did I risk? Risking about $30 to make about 150. And we can take a look here. We are up $160 for the day. Okay, so this is gonna be a clip as well. हाँ, अगर आपने मगरिब के लिए जाना है आप जा सकते हो, अगर अभी रुके हुए तो रुक जाओ, मुझे मसला कोई नहीं। जी मैं 5-10 मिनट तक लगा है। Okay. Man, this was a clean, simple trade. मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गया हूँ and I executed the buys. Everything was explained perfectly. Gold buys at 10. Yeah. This one we might have to you might have to edit from different clips. I'll tell you later on.
So now we're testing the highs that I thought we should, that I explained earlier on. Okay, it's time for me to head out as well. Saad, I'll get you the clips here soon, but as of right now, I think we're done with the stream. So मैं जो है ना इंशाल्लाह आपको कल मिलता हूँ स्ट्रीम पे, ठीक है? ओके। ठीक है, आप मुझे वो क्या कहते हैं, आपने दो काम करने हैं। एक कि आपने रेजोल्यूशन अपडेट करनी है, दूसरा आपने वो अपलोड करना है ट्यूसडे का। और कोशिश आपने करनी है कि जो दिन हो ना, अपना स्केजूल इस तरह बनाना है कि जो दिन यहाँ पे चल रहा हो उस दिन की लाइव स्ट्रीम में हम रिव्यू कर लें उस दिन की वीडियोस। जैसे आज ट्यूसडे की वीडियोस रिव्यू करनी चाहिए थी हमें, तो आप इस तरह का अपना स्केजूल बना लो, ठीक है? ओके। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। Alright everyone, thank you for watching. I will be seeing you guys tomorrow. Take care.